लिए काफ़ी इजी मेकअप है, आप ज़रूर ट्राई करना। ईयरिंग हैवी पहनते हो तो गले में कुछ ना पहने तो ही अच्छा लगता है। अगर आप ईयरिंग छोटे स्मॉल साइज़ के पहनते हो तो ऑफकोर्स आप गले में थोड़ा हेवी ज्वेलरी पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मोस्टली आप अगर कभी भी मांगते हो तो ईयरिंग भी छोटा होना चाहिए एंड नेकलेस भी छोटा होना चाहिए। तो मैंने नेकलेस नहीं पहना और मैंने मांगटी का पहना क्योंकि मेरी ईयरिंग काफ़ी हेवी और बहुत लुक ग्रैब कर लेती है और नाइट ग्लैम लुक। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो बिना वक्त ज़ाया किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर skin pimple, dark spot, black spot and dark circles, also high pigmentations of my nose area, cheeks area and all over. First I'm using Inshine primer 3-in-1. This primer long lasting and this is water formula. This is amazing primer I have been used, and it is very important before makeup. Primer is most important and this primer is amazing. Look at the finishing, it's a gel type and it's non-sticky. नेक्स्ट टाइम यूजिंग शाइन प्रो कंसीलर पैलेट, ऑरेंज कलर का पैलेट लगाऊंगी बिकॉज मैं हाई पिगमेंटेशन ऑफ आई एरिया एंड ब्लैक स्पॉट डार्क स्पॉट सारे पिंपल स्पॉट पे भी ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करूंगी। नेक्स्ट उसको ब्लेंड विद ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट टाइम यूजिंग मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन इज पीच ग्लो द शेड इज ब्लेंडिंग विद ब्यूटी ब्लेंडर। नेक्स्ट टाइम यूजिंग लिक्विड ब्लश, दिस इज माई फेवरेट ब्लश। ब्लेंडिंग विद फाउंडेशन ब्रश। नेक्स्ट टाइम यूजिंग बनाना लूज पाउडर फ्रॉम इनशाइन। दिस पाउडर is amazing after using concealer foundation and next time using Miskar ka eyebrow pencil is most important. Next time using crystal eyeshadow palette, this is from Beauty People and ये मैंने एक Instagram की पेज से बाई किया था। दिस पैलेट वॉज सो ब्यूटिफुल, लुक एट दैट। मैं सिर्फ 2 कलर यूज़ करने वाली, एक रेड और एक शिमरी गोल्डन, जो मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड विद फ्लफी ब्रश। नेक्स्ट मैं गोल्डन का शिमरी लुक लूँगी। तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग 1-in-1 लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ आई लाइनर। दिस इज अमेजिंग पाउच, आई लव दैट एंड दिस प्राइस इज सो अफोर्डेबल, जस्ट ₹199 and I love that. I purchased from Purple. Doing the same process other side. Next I am using mascara and lashes. मैं eyelash की glue के साथ उसको अच्छे से उसका स्टिक कर लूँगी। उसके बाद अगर आपकी आई छोटी है तो उसको थोड़ा साइड से कट कर लीजिएगा। मेरे बड़े हैं तो मैंने कट नहीं किया। अगर आपका छोटा है आई तो आप कट कर सकते हो, जैसे मैं लगा रही एग्जैक्ट वैसे लगाना। फिर मैं लूँगी एक ब्लैक लिप लाइनर। नेक्स्ट टाइम यूजिंग डार्क ब्राउन का लिपस्टिक, इट्स लुक अमेजिंग एंड मैं उसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके लगाती हूँ लिपस्टिक, इट्स माय फेवरेट पार्ट। तो मैं एक हुडा ब्यूटी का पिंक कलर का शेड लूँगी जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगी, इट्स लुक अमेजिंग। फिर मैं ये ब्यूटीफुल सा ईयरिंग पहनने वाली। नेक्स्ट टाइम स्विच ब्यूटी का हाईलाइटर, दिस इज माय फेवरेट हाईलाइटर। आई नो गाइस ये आपका भी हाईलाइटर फेवरेट होगा, तो मैं सबसे पहले लास्ट में हाईलाइटर लगाती हूँ। नेक्स्ट टाइम यूजिंग एनी वाई विद फिक्स सेटिंग स्प्रे, दिस इज अ मिनी सेटिंग स्प्रे, इट्स अमेजिंग। अगर आप विंटर पे मेकअप करें तो सेटिंग स्प्रे जरूर लगाना अगर आप इतने हेवी मेकअप करते हो। नेक्स्ट मैं फिर वो तो साड़ी पहनने वाली, दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको ये लुक पसंद आया होगा। इट इज़ वेरी इजी, आपको देख के लग ही रहा होगा इट इज़ नॉट सो मच ऑफ डिफ़िकल्ट, बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं, आपने जैसा दिखा बहुत ईजी वे में सिखाया। एंड प्रोडक्ट इट्स सो अफोर्डेबल, प्रोडक्ट आपको नायका बहुत मिल जाए। अगर आपको मेरा आई मेकअप एंड ऑल ओवर मेकअप अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यस, हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड स्टे बाय बाय।